नमस्कार, मैं काजल और आप इस समय देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7। जालोद तहसील के लिमड़ी नगर में भगवान श्री जगन्नाथ जी की 8वीं रथ यात्रा निकाली गई। लिमड़ी नगर में भगवान श्री जगन्नाथ जी की 8वीं रथ यात्रा के दौरान लिमड़ी नगर के सारे समाज के लोग वहां पे मौजूद थे। सबने हंसी खुशी और काफी धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई और लिमड़ी नगर के कार्यकर्ताओं ने नाश्ता पानी का व्यवस्था भी किया हुआ था। और हर साल की तरह इस साल भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई लिमड़ी नगर में। और लिमड़ी नगर में भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा में बच्चे, जवान, महिला, पुरुष एवं बुजुर्ग भी उपलब्ध थे। और लिमड़ी नगर में पुलिस के चुस्त बंदोबस्तों के बीच शांतिपूर्वक रथ यात्रा निकाली गई। नमस्कार। आज रोज लिमड़ी में श्री भगवान जगन्नाथ श्री जी की रथ यात्रा निकल रही है। उसमें लायंस क्लब लिमड़ी द्वारा नई बाजार में आज उनका स्वागत करने में आया है। आज हमारे साथ में लायंस क्लब के पूर्व प्रमुखों एवं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री नरेंद्र भाई सोनी के साथ में ये आयोजन किया गया है और इस यात्रा का नई बाजार में लायंस क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र कुमार जैन, मैं लायंस क्लब का भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ। લીમડીની અંદર ભવ્ય 8મી રથયાત્રા નીકળી છે। આપ સૌ ભક્તોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। લીમડી નગરમાં જ્યારે રથયાત્રા નીકળે છે ત્યારે અવનવા પ્રયોગો થાય છે। કોઈ ભોજન રાખે છે, કોઈ નાસ્તો રાખે છે, કોઈ ઠંડા પીણો રાખે છે। જ્યારે અમારી લાયન્સ ક્લબની ટીમે એવું વિચાર્યું કે શા માટે આપણે એવો કોઈક નવતર પ્રયોગ કરીએ જેથી શિક્ષણમાં જાગૃતિ આવે, તો અમે વિચાર્યું કે શાળાની અંદર આજુબાજુ ગામડામાં જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ હોય છે તેમને આપણે બેગ, નોટબુક અને દેશી શાક આપી એમને અભ્યાસ પ્રત્યે પ્રેરણા આપીએ કે સારામાં સારું એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરે અને સારામાં સારું એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત થશે તો જ આ દેશ શ્રેષ્ઠ ભારત તરીકે વિકસશે। અને જેથી અમે આજ રોજ આ આયોજન કર્યું છે અને અમારા સ્કૂલના જે લોકો આવ્યા છે, કન્યા શાળા લીમડી તથા આપણે લીમડી બરોડથી અમારા આચાર્ય સાહેબ આપ્યા છે, તેમને આજે અમે આ નોટબુક અને આ વિતરણ કરવા ઈચ્છીએ છીએ। તમારું શુભ નામ? મુકેશ કુમાર પૂનમચંદ સોની। હું મુકેશ જ્વેલર્સ નવા બજારમાં દુકાન ધરાવું છું અને લાયન્સ ક્લબ લીમડીમાં મારા વાઈફ આ વખતે પ્રેસિડેન્ટ બનવાના હોય એમની શુભ શરૂઆત મેં આજે આથી શરૂઆત કરી છે। आरजे भारत न्यूज 7 के लिए लिमड़ी से हितेश प्रजापति की ये खास रिपोर्ट। फिलहाल आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7। मैं काजल आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम आपके शहर की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।